Good morning, dear students. Welcome to computer class, and we will take our chapter number 3. Okay. Today we will take our chapter number 3. And what is the name of the chapter? The name of the chapter is More on Paint. Okay. More on Paint. You all are familiar with Microsoft Paint. It is a paint program which is used to draw drawings, and you can fill the drawings with different colors. Okay, it is a drawing software. In this chapter, we will learn more about MS Paint and its various tools. Okay, so in this chapter, we will learn some more on paint and its other tools. The ribbon contains various other tools that help us to work in paint. Okay, so ribbon is the part where all the tools are there on the ribbon, and from there you can choose any of the tool and you can use it. Okay. You can see the picture of the ribbon on your screen. This is the ribbon, and this ribbon is divided into different groups. First one is your clipboard group, the second one is your image group, and third is the tools group, and fourth one is shapes group, and the last one is colors group. Okay. So from the shapes group you can choose different types of shapes to draw on the drawing area. Okay. In previous class, you have learned about oval tool, line tool, fill with color tool, and eraser tool. You know what is oval tool? Oval tool, with the help of oval tool, you can draw circles or ovals in the paint. Okay. And what is the line tool? Simple, it is used to draw a straight line. Fill with color tool, by using fill with color tool you can fill the enclosed figure with the required color. And the last one is the eraser tool. Eraser tool is used to draw to erase the drawing or any part of the drawing. Okay, तो ये सारी चीज़ें आपने चारों टूल्स आपने प्रीवियस क्लास में आपने सीखे हैं. आपको पता है ओवल टूल से सर्कल या ओवल बनाया जाता है. फिल विद कलर से आपको कलर फिल करते हैं ड्राइंग में, एंड इरेजर टूल से आप इरेजर ड्राइंग की इरेज करते हैं. लेट अस लर्न अबाउट द पॉलीगन, कर्व, कलर पिकर एंड मैग्नीफायर टूल्स इन पेंट. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल कवर these tools of Microsoft Paint. You can see the different tools. Okay, see this one is your color picker tool. Okay, in the tools group this is color picker tool. Next one is your magnifier tool, and the third one is your the curve tool, and the last one is your polygon tool. Okay, one by one we will discuss each tool. First one is your polygon tool. Okay, what is the polygon tool? The polygon tool is used to draw a closed shape with more than two sides. Okay, so the polygon is a figure which contains more than two sides. दो साइड से ज़्यादा जिस फिगर में साइड्स होंगी वो आपका पॉलीगन कहलाता है. एंड इट इज़ अ क्लोज फिगर. क्लोज भी चारों तरफ से बंद होगा. टू ड्रॉ अ पॉलीगन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. ओके, टू ड्रॉ अ पॉलीगन in MS Paint, Microsoft Paint, we have to follow the given steps. You can see the figure or picture of polygon
First of all, step number 1 is click on the polygon tool. Okay, from the shapes group, click on polygon tool, drag the pointer and draw a straight line. Okay, in the drawing area means the white area, that is known as drawing area, and draw a straight line and click at each point where you want additional sides to appear. तो आपको क्या करना है, आपको हर पॉइंट पे आपको क्लिक करना है जहाँ से आपको नई लाइन को स्टार्ट करना है, और इस तरह से क्या करेंगे, यू विल डू कनेक्ट द लास्ट लाइन टू द फर्स्ट लाइन टू फिनिश ड्राइंग द पॉलीगन एंड टू क्लोज द शेप. ओके, और लास्ट में जाके जहाँ भी आप क्लिक करते आओगे वो लाइन आपको जुड़ती जाएगी, और लास्ट में आके आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट थी वहाँ पर आपको क्लिक करना है. तो क्या होगा, द लास्ट लाइन विल बी कनेक्टेड टू द first line. In this way you can draw a figure which contains more than 2 lines, that is known as polygon. Okay, next is your curve tool. Okay, curve tool means it is used to draw a smooth curved line. Okay, curve means थोड़ी सी waves की तरह वो line होगी, and to draw a curved line follow the steps given below. Okay, you can see the picture of a curved line. Okay, first of all, number 1 is click on the curve tool. means before using any tool, कोई भी tool use करने से पहले उसे हमें माउस से select करके click करना है, then only you can use the particular tool. Okay, then drag the pointer and draw a line. Okay, with the help of mouse, after clicking on curve tool in the drawing area में आपको क्या करना है, एक straight line drag करते हुए माउस को बटन को प्रेस करते हुए you have to draw a straight line. Okay, and straight line करने के बाद में click and drag the mouse anywhere on the drawing area to curve the line. और उस लाइन जो लाइन ड्रॉ की है उसमें आपको कर्व देने के लिए आपको डाउन साइड में अप साइड में आपको बस ड्राइंग एरिया पे यू हैव टू क्लिक विद द माउस, लेफ्ट क्लिक विद द माउस. आप देखेंगे कि जैसे एज सुन एज यू क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस इन द ब्लैंक एरिया ऑफ द ड्राइंग एरिया, द लाइन विल बी कर्व्ड. द लाइन विल बी कर्व्ड फ्रॉम दैट side. Okay, and repeat step 3 on another point to make another bend. Okay, and finally release the mouse button to finish. Okay, once you have made curve, you can give more than 2 curves. In this drawing, in this example, I have given you only 2 curves. Okay, एक मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ऐसे करके, देन नीचे क्लिक किया तो ये यहाँ कर्व बन गया है, और उसके बाद में मैंने माउस से ऊपर क्लिक किया है और ये आपका कर्व बन गया. और ये लाइन अभी आपकी यदि लंबी होती तो यू कैन कर्व मेक more than 2 curves. Okay, in this way you can create a smooth curve line. Next is your color picker tool. Okay, in the shape tool you will find a color picker tool. Okay, the color picker tool is used to choose the color from an image in the drawing and use it on another image. So you will see a color picker means it is like a eyedropper. The shape of the color picker tool is just like a eyedropper. आप देखते हैं eyedropper को use करते हैं. When you use eyedropper, just press the eyedropper and the medicine will fill in the dropper and you can use it. So this tool is used to pick माने लेना exact color from the previous drawing that is filled with color. यदि कोई कलर आपको exact color लेना है जो पहले आपने यूज किया हुआ है, you can use the color picker tool and you can use that color in the new drawing. Okay, it helps you to pick exactly the same color used in any area of the drawing. Okay, just I told you, it is used to pick the exactly the same color which is used in any area of the drawing. And to use this tool, we have to follow the steps.
First one is click on the color picker tool. Again you have to choose the color picker tool. Click on the color in the picture that you want to set as a color. Okay. So click on the color in the picture. जो कलर आपको चूज करना है फ्रॉम द अर्लियर यूज कलर, जस्ट क्लिक ऑन दैट टू सेट द कलर एज color 1 and select the fill with color tool. Once you have selected the required color from the color picker tool से जो टूल कलर आपने चूज कर लिया है वो आपका color 1 बन जाएगा. एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन fill with color tool, उस पर क्लिक करेंगे एंड यू कैन fill the another picture with the same color or the selected color which you have used earlier. जो आपने पहले यूज किया है वही कलर सेम आपका दूसरी ड्राइंग में फिल हो जाएगा. नेक्स्ट इज योर मैग्नीफायर टूल. द पिक्चर ऑफ मैग्नीफायर टूल इज जस्ट लाइक अ लेंस. तो लेंस का काम क्या होता है? टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना. तो ये टूल भी क्या करता है? आपकी ड्राइंग को थोड़ा सा जूम इन, थोड़ा सा बड़ा करके एनलार्ज करके दिखाता है. The magnifier tool is used to zoom into a picture, and to use magnifier tool follow the steps given below. Okay, so the magnifier tool is used to zoom into a picture, means it will used to zoom in. Zoom in means पिक्चर को थोड़ा सा enlarge, बड़ा करके आपको स्क्रीन पर दिखाएगा. Okay, and what are the steps to zoom in the picture? First of all, click on the magnifier tool. Again you have to choose the required tool, that is your magnifier tool. Bring the mouse pointer to the drawing area. When you bring the mouse pointer to the drawing area, जब हम माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया पे लेके आएंगे तो आप देखेंगे यू विल सी अ स्मॉल रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड. एक छोटा सा रेक्टेंगल बनेगा और वो रेक्टेंगल क्या करोगे? वो रेक्टेंगल जिस भी ड्राइंग एरिया के पार्ट पर आप क्लिक करोगे, that particular area will be zoomed in. The picture gets magnified and the area within the rectangle gets zoomed in. तो जो रेक्टेंगल के अंदर जितना एरिया है वो आपका जूम हो जाएगा, मीन्स थोड़ा सा बड़ा होकर आपको दिखाई देगा. एंड टू रिटर्न टू द नॉर्मल साइज ऑफ द पिक्चर, if you want to go back to the same position that was before zooming the picture, simply right click and on the picture. Simply right click on the picture. इससे क्या होगा? आपकी जो पिक्चर है वो नॉर्मल आपको दिखाई देगी. नेक्स्ट इज योर क्रिएट एंड एडिट कलर्स. क्रिएट एंड एडिट कलर्स. ओके, तो यू कैन क्रिएट और एडिट योर ओन कलर इन द Microsoft Paint. There are many colors in the colors group. You can create new colors on it, the shade of an existing color. To create or edit color in Paint, we have to follow the following steps. You can see this is a color palette of Microsoft Paint. See the steps how we can edit a color or you can create a color. Click on the edit colors option from the colors group in the home tab to open the color palette. Okay, once you click on the edit colors of colors group, you will find a color palette. This is your color palette, and click anywhere in the color palette to choose a color. So from this area you will see these are the mixture of different colors. Click on the area to choose a color, and you will find a small arrow over here. With the help of this arrow, drag the small arrow up and down to make selected color darker or lighter. Okay, with the help of this arrow, you can make the color darker or lighter. Okay, आप उसको डार्क कर सकते हैं और थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हैं. If you go upward, it will light the color.
make it lighter, or if you go downward, it will make the color dark. And finally, click on the add to custom colors. You will see a button over here, add to custom colors, and after that click on the OK button. Okay. Your next topic is setting a picture as the desktop background. Setting a picture as the desktop background means you have created a beautiful scenery or a picture in Microsoft Paint. Okay. You can set that picture as a background of your screen or the desktop background. Okay, what is a desktop background? It is the background picture of the desktop, and you can use your own drawing as a desktop picture. Okay, to set a picture drawn in Paint as a desktop background, तो जो पिक्चर आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड के लिए लगानी है, सबसे पहले क्या करना है, ओपन दैट पिक्चर, ओपन अ सेव पिक्चर विच यू हैव ऑलरेडी सेव्ड. जो पिक्चर आपने बनाई है, पहले से सेव की हुई है, उसको पहले ओपन करना है, एंड वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. ओके, क्लिक ऑन द पेंट बटन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ribbon. Okay, you have to click on the left corner of the ribbon. A menu opens. Okay, छोटा सा मेनू आएगा. Reset the pointer on the set as desktop background option. You will find a set as desktop background option there, and you have to move the mouse pointer over there. Again, a sub menu opens showing different styles to set a picture. You will find different styles to set a picture. Click on the show desktop button on the taskbar to see the desktop. So from there, by clicking on the show desktop button पे आप क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा वो आपका बैकग्राउंड पिक्चर आपको जो आप सेट कर रहे हो आपको दिखाई देगा, कैसे आपका वो बैकग्राउंड आपको दिखाई देगा. And there are 3 different styles to set a picture as desktop. First one is your fill. If you choose fill option, your entire screen will fill with the picture. Then second one is your tile, means your full screen or the entire screen will fill with the drawing, means many drawings in the tile, in a small boxes type. Okay, and the last one is the center. If you choose the center option, your drawing will be placed at the center of the screen. Okay, so students, this was the chapter number 3. Thank you for joining the class and watching the video. Thank you very much.